हाय गाइस व्हाट्स अप। तो बहुत ज़्यादा वीडियोस में ऐसे देख रहा था, मतलब मेरे फीड में काफ़ी आ रही थी मटीरियलिज्म एंड हैप्पीनेस को लेके, राइट? कि मतलब डज मनी बाय हैप्पीनेस और डज इट नॉट, वगैरह वगैरह, फलाना ढिंका, जो कि आई मीन एक एज ओल्ड डिबेट है, राइट? एंड लैक ऑफ मनी, तो वी ऑल नो दैट डज बाय अनहैप्पीनेस, बट डज मनी रियली बाय हैप्पीनेस? सो आई बीन एक्सप्लोरिंग दिस फॉर अ व्हाइल। आई बीन, मतलब लास्ट एक महीने और सो से मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ, मतलब एक महीना नहीं, 2-3 महीनों से लास्ट मैं पैसा स्पेंड कर रहा हूँ काफ़ी सारा। और ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हैप्पीनेस खरीदूँ, क्योंकि बीच में मुझे क्या लग रहा था कि आई एम जस्ट होर्डिंग ऑन टू मनी एंड लाइक फिर उसको मैं बिना स्पेंड नहीं करूँगा तो शायद मुझे खुशी नहीं मिलेगी। और फिर मैंने बहुत सारा स्पेंड किया एंड खुशी मिलती है पैसा स्पेंड करने से, बट इट्स जस्ट वेरी लिमिटेड। इट्स लाइक till the time you're excited for that one product, you bought the product, you're waiting for that product to come up, मतलब to your door. The product comes to your door and you unbox it, you try it, like जो भी यूटिलिटी है उसकी तुमने उसको यूज़ किया, एंड दैट्स इट। उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उसके बाद एवरी टाइम यू यूज़ द प्रोडक्ट मे बी आर a bit more relaxed but diminishing returns, right? You have something new that comes up in your mind. वो वो जो एक कंटिन्यूअस एक स्ट्रगल है कि आपको कंटिन्यूअसली हर दिन कुछ ना कुछ नया करना पड़ रहा है ताकि आप खुश रहो, बिकॉज योर माइंड जस्ट गेट्स, आई थिंक, नॉर्मलाइज्ड टू वॉट एवर देर इज़। एंड आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग, बिकॉज अगर तुम बहुत जल्दी सेटल या खुश हो जाते हैं, या फिर जो जो भी तुम्हारे पास अभी होता करेंटली, अगर तुम उसी के साथ खुश हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर तो बात ही नहीं होती ना भाई। फिर तो इंसान होने का मतलब क्या है? अगर अगर तुम अभी एक्स पे हो, कोई एक एक्स पोजिशन में हो लाइफ में, अगर तुम्हें लगता है कि X+20 पे तुम सिक्योर हो जाओगे, तुम हैप्पी हो जाओगे, लाइक दैट्स वेयर द हैप्पीनेस लाइज, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, फिर कंप्लीटली रॉन्ग। बिकॉज X+20 अभी ऑलरेडी किसी की लाइफ है और वो हैप्पी नहीं है, और ना तुम्हारी होगी X+20 पे जाके। लाइफ इज एक्चुअली गोना रिमेन द सेम। इट माइट गेट अ लिटिल ईजियर, बट मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर लाइक तुम्हारे मतलब तुम्हारे पास अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, जिसमें मतलब तुम्हारे पास वो वाला फ़ोन है जिसमें फिंगरप्रिंट से स्कैन होके खुलता है, या फिर पासवर्ड लगाना पड़ता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नहीं है आज के टाइम पे उस फ़ोन पे, नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन है, बट उस पर व्हाट्सएप चलता है। अब अगर तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे कोई इंसान नहीं है बात करने के लिए, तो तुम वो मतलब लेटेस्ट आईफोन रख कर भी कुछ कर नहीं पाओगे, या लाइक इट डजंट हेल्प। यू गेटिंग माय पॉइंट? And what I've seen over the years is a lot of people trying to create happiness to through other things. That could be a game, that could be a movie, that could be going out with friends, that would be getting into a relationship. It's like it all stays, but then until unless you cannot be happy alone, अगर आप अकेले बैठे हो, आज इस रूम में मैं बैठा हूँ, कोई भी नहीं है आसपास मेरे, अगर मैं खुश रह पा रहा हूँ सिर्फ अकेले बैठे बैठे अपने आप से बात करके, तो दैट लाइक तो फिर आप जेन्युइनली हैप्पी हो सकते हो, बिकॉज फिर आप हर स्टेट में हैप्पी हो, भले लाइफ एक्चुअली बुरे भी चल रही है तो भी आप खुश हो, ठीक है? तो आई थिंक इन जनरल, मतलब जो मैंने नोटिस किया है, इज दैट यू हैव टू आस्क योर क्वेश्चन ऑन हाउ बैड माई लाइफ इज कंपेयर टू अदर्स, एंड यू यूजुअली बी जस्ट ओके। बिकॉज क्या होता है, जब एक बार, जैसे मैंने बताया वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स का जो मैं बोल रहा था, जैसे एक बार तुमने सारी मटीरियलिस्टिक जो थिंग्स जो है आसपास की हैं वो खरीद ली ना, लाइक अभी मेरे पास प्राइवेट जेट वाइवेट जेट नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत ही क्रेजी कार या बहुत ही क्रेजी घर नहीं है, मैं कोई विला में नहीं रह रहा हूँ 10 BHK वाले वो, है ना, कोई स्वर्ण घर में नहीं रह रहा हूँ मैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि लाइक वो चीज़ें करना 101% ज़रूरी है जस्ट सो दैट आई एम हैप्पी। वो होता ही नहीं है कभी। बट इफ़ यूर वंस योर बेसिक नीड्स आर मेट, आई थिंक I think anything above that is a bonus for a while. So probably like the other day I drove someone else's car, and it was a much better car than what I have, and it was good. It was really good. It was very comfortable because it was a much newer car, so it was much more comfortable, मतलब much more easier to drive, और वो फास्ट भी भागती, एक्सेलरेट भी होती जल्दी, है ना, और लाइक जो ब्रेक्स भी बेटर, सब कुछ बेटर। पर
I still reached A to B point. Like no matter which car I went in, I still reached from A to B. It still took in petrol. It was still the same kind of मतलब like at the end of the day, I don't remember the drive now much more. मतलब अभी मेरे को drive इतनी याद नहीं है. मतलब मुझे बस ये याद है कि ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हैं जो मुझे उस टाइम में मिले थे, बट जैसे ही मैं कार से उतरा, लाइफ जस्ट बिकेम द सेम फॉर मी. है ना, हैविंग दैट कार और नॉट हैविंग इट, आई डोंट थिंक चेंजेस मच इन माई लाइफ. ठीक है. एंड व्हाई आई एम डिबेटिंग दिस इज बिकॉज आई एम आस्किंग माई सेल्फ दिस क्वेश्चन ऑल द टाइम कि शुड आई वेस्ट माई मनी और नॉट. Should I waste it on the name of I'm gonna be only 22 now, and I'll never be 22 again, or should I just be like कि ठीक है, hmm, I'll have a tomorrow to where I'll be able to buy a better car, a better house, and then like I'll have another tomorrow, right? तो बेसिकली क्या मेरे को आज सारी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ कर लेनी चाहिए, या फिर मुझे अभी रुक जाना चाहिए, मुझे होल्ड करना चाहिए, एंड फिर बाद में जाके मुझे लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए. बिकॉज ये दोनों चीज़ें जो है ना साथ में करना एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल है. बिकॉज क्या होता है, जैसे अभी मान लो मैंने अगर मैं कर कोई एक्सपेंसिव परचेस कर लेता हूँ ना, तो मुझे फिर उस एक्सपेंसिव परचेस को 100% क्या बोलते हैं, वर्थ इट घोषित करना पड़ेगा मेरे सिस्टम के अंदर. वरना मेरे को हर दिन ऑफ दैट परचेज रिग्रेट होते रहेगा. और अगर आपने कुछ परचेज कर लिया और उसके बाद आपको रिग्रेट हो रहा है ना उसका, तो आप उस चीज़ को चाह कर भी इंजॉय नहीं कर पाओगे. समझ रहे हो मेरी बात. द डे आई स्विच्ड फ्रॉम अ 10,000 rupee फ़ोन टू एन iPhone, uh, in the first 1 hour or 2 hour it was good, but then later down the line I knew that I made a super expensive purchase, something that I couldn't really afford much. Well, I could afford it. I had a few lakhs saved, but I just didn't have enough to spend it on a phone. Like I just cannot buy 10% of my account value. My phone made 10% meaning I think at that time I was 25% of my account value just went in a phone. So it was too much money to just throw into a phone, right? So एट दैट टाइम आई रियलाइज कि इतने बड़े परचेजेस करना माइट बी एक्चुअली प्रिटी बैड. बिकॉज एक बार तुमने परचेस कर लिया तो तुम्हें फिर डर ही लगता रहता है पूरे दिन कि इसको कुछ हो तो नहीं जाए, इसमें कुछ क्रैश तो नहीं आ जाए. है ना, तुम्हारी पूरी जान उस पर्टिकुलर मटेरियल ऑब्सेशन मतलब उस चीज़ के लिए लगी रहती है और तुम उसको इन्जॉय नहीं कर पाते. ठीक है, उस लेवल पे धीरे धीरे वो चला जाता है, बट उस लेवल पे उस चीज़ को नहीं इन्जॉय कर पाते क्योंकि तुम एक नया नहीं खरीद सकते. अगर वो ख़राब हो गया तो तुम उसको वापस नहीं खरीद पाओगे. So now I have actually two options. Think about it like this. I can today, not today, after 6 months, I can go and buy a BMW M340i. So I can wait, I can buy that. Or I can today go buy a Varna and buy a Kawasaki, right? For 4 or 5 lakh rupees, a Kawasaki and 20 lakhs of Varna. And that's gonna net me 25 lakhs, 24 lakhs, whatever. And then I'll have another 60 lakhs to travel the world. So that's one way. The other way is I go and buy an 84 lakh rupee car, which is gonna drain me out, which is gonna take months of my income. Just ले जाएगा वो बस. ठीक है. तो I think the question is quite clear अभी फिलहाल मेरे मन में कि that M340i has to wait. Or maybe one more option that I have is to get a second hand BMW, which could be actually a decent decision. Though I don't really want to buy a second hand car, I don't want to go into the hassle of using that second hand car. But then a BMW is a BMW. I mean, if I can buy it, does it really matter, to be very honest, that much? So I'm still debating. I will go on a test drive or maybe something like that, and then I'll see whether it's really worth it to get a, BMW 330 I or something like that from like 2 3 years ago, or maybe it's worth to go for the I'm not gonna go test drive the M340i. My dad already did, and he told me it's an amazing car. But the thing is now I'm debating it so much because इतने सारे लोगों ने मेरे को बोल दिया ना कि it's not worth it, it's not worth it, it's not worth it, Arush, don't do it right now, don't do it right now. Is that कि I don't know, like the problem is, even if I, let's say today I have enough money to buy a Porsche, I don't think I'm gonna go and buy the Porsche. I don't think I'm gonna do that. I don't think I can ever.
पुट ऑल ऑफ माई इनकम, बिकॉज क्या होगा, अभी मैं वो जाके कार खरीद लूँगा BMW। कार तो मैंने बुक भी कर दी थी, ठीक है, अब मतलब मैंने टोकन अमाउंट दिया हुआ एक छोटा था, और मेरा टोकन अमाउंट मेरे पास 2 हफ्ते हैं, उसको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ टोकन अमाउंट को। तो मैं सोच रहा हूँ विड्रॉ कर लूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना भाई कि लाइक आई एम जेन्युइनली हैविंग डबल ट्वेल थॉट्स ऑन दिस, बिकॉज देखो सोच के देखो, मतलब तुमने वो कार ले भी ली, मैं उतनी तेज़ ड्राइव करने वाला नहीं हूँ पहली बात, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव करने में बिलीव नहीं करता, एंड दी अदर थिंग इज़ कि मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। पता नहीं भाई, पता नहीं। आई नो इट्स एन अमेजिंग कार एंड आई लव BMWs, आई लव दैट कार, but it's like a crazy, it's like a crazy purchase if I do so. And other people who are of a similar stature, like sorry, not a similar stature, I would say similar age or similar this matlab similar things, just comparing to other people, they do the same mistakes, they buy more than they can chew, and when they do that, they usually face up a lot of problems. So I had to be different than them. I can't be the average guy. I can't be the average guy on the street and just take all the bad decisions in life. I can't be that guy, right? Or is it more important for me to just enjoy life? Because I'll never be 22 again, so I can just get the car, drive it, be the 22 guy who has BMW. Matlab, BMW, the M series and all, dude, they have those pedal shifters, like, you know, you're getting my point, right? Those cars are just crazy. If you can buy them on yourself, like if I buy them cash without like my parents' help and all, you know, it gives you that self confidence that like nothing else can give you. Buying things does give you this, yeah, materialistic things. I'll put this up, they do give you this self confidence that nothing in this world can give you, because once you can own something, it could be very small, it could be, once you can have something which is something that other people cannot afford, it gives you that one status. And now I finally understand why people buy certain things which other people just cannot afford, and are sometimes not even, they don't even make sense. Like for example, cars do make sense, but they don't make as much sense as you would feel like. And मतलब ऐसा नहीं कि car one can also take you A to B, car two can also take you A to B, it might be a little faster, and it has always help, like money always has diminishing returns at the top, right? So what you can get for 100,000, like what you can get for $10,000, $20,000, a car for $20,000 is gonna be way more worth it than something that you can get for $200,000, right? So वही बात है बस कि now the debate is going on. Let's see मेरे दिमाग में कौन जीतता है to make a decision. इवन मतलब मेरा मन तो यार वरना लेने का भी नहीं कर रहा अब मेरा मन कर रहा है कि मैं सेकंड हैंड BMWs देखूं. Let's see how it works. देखते हैं. Okay, anyways, I'll get back to you in the next video. Till then, bye bye.